नहीं, ये आप पेज क्या बता रहे थे? 1958 बेटे को अरेस्ट कर दिया गया था और उनकी बेल और रिक्वायरमेंट हुई फाइनली। We are hearing this case now. रात को चलो ठीक है, होटल में बंद हो गया। हम आ नहीं सके इसलिए को दिया। I'm sure he has done a wonderful job. Thank you, sir. No, we don't mind. You want to argue, you argue. हमें कोई इतराज नहीं किस कौन आर्ग्यू करे। जी आप बताइए कौन सा पेज? जी सर, पैराग्राफ 35 में लौट 35 मिनट, पेज 1993। पैराग्राफ 35 जी मतलब may I read, Malak? Admittedly, the provincial government has power to make laws for maintaining law and order situation in the province, and to the extent of its territory, there is no limitation on its power to make laws as far as subject under discussion is concerned, except that no law shall be made which is against the fundamental rights guaranteed by the Constitution, including Article 9, 10A and 24 thereof. It has been noted earlier that... अगला जी सर, और इसका 35 and 49, पैरा 49 में 49 इसमें जो ऑर्डर फरमाया और फाइनली डायरेक्शन फरमाई पेज 49 पे है। मतलब अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो जनाब खुद देख लें। Thus, in view of the above discussion, the following order is hereby passed. Number 1, the court in exercise of jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution has jurisdiction to enforce fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 of the Constitution, as it considers that a question of public importance involving enforcement of the fundamental rights enshrined under a Constitution, which is Article 4, and with fundamental rights under Article 9, 10A, 14, 15, 17, 18, 24 and 25 of the Constitution have been violated. The incumbent provincial government has failed to establish writ of law in the province, on account of which the fundamental rights of the citizens noted here and above have been violated. The people of Balochistan also include civilians, members of the law enforcement agencies, that is the police. ठीक है, वो खास बात आप बताएं ना। फंडामेंटल राइट्स का सारा है वो तो जाहिर है, तो हम आपको ऑब्जेक्शन तो हमने ओवररूल कर दिया ना जी सर, वो ओवररूल जनाब, तो फिर इसकी रेलेवेंस नहीं रही ना। जो मेनली हमने तो आपकी एंटरटेन कर फरमा ली जी सर। अभी नंबर आज लगा नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जनाब ने कल ऑर्डर फरमा दिया था कि नंबर लगाएं इसको, वो 3 में शायद लग जाएगा। उनकी पिटीशन के ऊपर जनाब ने वो ऑब्जेक्शन जो था रजिस्ट्रार का, कल तो हमने शॉर्ट एक ही लफ्ज का ऑर्डर है जी सर, वो लेकिन नंबर लगना चाहिए लिखा है और कुछ नहीं जी, मगर हमने कह दिया ना, वो हमने मुस्तरद कर दिए हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल हो गए थे आपके केस में जी सर, लेकिन आज लिख देंगे, फिक्र ना करें जी सर, ठीक है। लेकिन इसमें मैं जनाब को जो गुजारिश करना चाह रहा था, जो डायरेक्शंस मिसिंग पर्संस के हवाले से थी वो भी इसमें सारी शामिल हैं कि किस तरह आगे प्रोसीड करना है, कौन कौन वो बताइए वो कहाँ है जी, वो इसमें सर। तो फिर कमीशन बना होगा ना उसी ऑर्डर की रोशनी में, पुराने जो कमीशन बना है इसका इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का, वो कब बना है ये बताएं ना। वो ये जो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो कहाँ है? जी सर, वो तो 2011 में कमीशन बना था। ये इसके जजमेंट में बताइए जी सर। इसमें सर जो है एक ही किताब है, ये पैराग्राफ में लौट, जो पैराग्राफ इसमें 3 है, यहाँ से शुरू है कि 3 जी सर, पेज 2020। किलिंग्स की बात है ज्यादा, मिसिंग पर्सन्स की बात कहाँ है? किलिंग्स, अबडक्शन फॉर रैंसम, सेक्टेरियन किलिंग्स, नहीं आप कह रहे हैं ना मिसिंग पर्सन्स की बात, वो कहाँ है इसमें? जी सर, वो सारी इसमें पूरी तफसील के साथ उन्होंने, ये तो ज्यादातर टारगेटेड किलिंग्स है ना जी, रैंसम, सेक्टेरियन किलिंग्स जी। ये पैराग्राफ 5 सर अगर देखेंगे, IDPs, we direct the government, पैरा 5 से ऊपर 3 लाइनें, we direct the government of Balochistan to accelerate this process and at the same time पैराग्राफ कौन सा पेज बताइए? कौन सा है ये? पेज 2005 ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं, 2005 वो सब पैराग्राफ 5, द फेडरल गवर्नमेंट जी जी, फेडरल गवर्नमेंट से ऊपर की 3 लाइन एंड देन फेडरल गवर्नमेंट पैरा 5 में भी, और फिर देन 6 भी। ये तो मर्डर्स एंड किलिंग्स हुई थी ना, सेक्टेरियन वायलेंस जी, लेकिन वो ये रेलेवेंट नहीं है जी। नेक्स्ट सर जो
एक्सक्लूसिवली मिसिंग पर्सन्स को जजमेंट है सर दूसरी PLD 2014, ये सुओ मोटो एक्शन लिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 305 रेलिवेंट इसके पैरा है सर 16 और 17 पैराग्राफ 16 और 17 में लो, पेज है 320. As the federal government through Prime Minister, Cabinet working through Chief Executive in terms of Article 90 is very much in the picture, it is their duty to ensure the protection of these persons and also to ensure that all those officers who are responsible for their removal and have failed to account for this so far should be dealt with in accordance with law. The Acting Defence Secretary, through the though he apparently did his best, could not achieve the object for ठीक है, ये रेलेवेंट है. जी मैडम. हाँ ठीक है, ये तो रेलेवेंट है. जी मैडम. एनी अदर केस? जी सर. नेक्स्ट सर है इसका पैरा 16 भी एंड 17 भी सर. 17 जी 17 में सर है और 18 में भी कुछ डायरेक्शंस दी हैं. 17 पेज अगले पे है 321 पे. It may be out of context to note that in somewhat identical circumstances, the Supreme Court of Nepal in the forced disappearance cases dated first so-and-so applied the principles enshrined in the Convention Against Enforced Disappearances 2006, despite the fact that the Nepal had not ratified the same. करेक्ट. आगे जी सर. ये सर फिर इसको 18 में भी थोड़ा सा इस हवाले एनी से. अदर जजमेंट? जी सर. दूसरी जजमेंट सर नेक्स्ट है माय लॉर्ड आथर जज हैं धरना केस में फैजाबाद धरना केस PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318, उसका एजेंसीज के रोल के हवाले से भी 318 PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318. इसमें रेलेवेंट पोर्शन क्या है? पैरा 43 माय लॉर्ड. पैरा 43 42 माय लॉर्ड. 42 से पेज 348. The report submitted by पैराग्राफ इससे मिसिंग पर्सन का क्या ताल्लुक है? सर रोल ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज कि उनका कितना है, क्या रोल होना चाहिए, क्या उनका इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन अपने मैंडेट में रहे. स्पेसिफिकली कुछ है? स्पेसिफिकली मिसिंग पर्सन्स का तो एज सच नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इसमें रेलेवेंट है वो जो अभी लोगों को हटाया गया है यहाँ से जो कर रहे थे वो प्रोटेस्ट जी, उनको तो प्रोटेक्शन मिलती है कि वो पैराग्राफ पढ़िए ना आप जी. लॉफुल असेंबली वो कर सकते हैं. ये देखिए पैराग्राफ 2 पढ़िए, पैराग्राफ 53 का. जी माय लॉर्ड 53 जी सब 53 का 2 पढ़िए जी. Every citizen and political party has the right to assemble and protest, provided such assembly and protest is peaceful and complies with the law, imposing reasonable restrictions in the interest of public order. The right to assemble and protest is circumscribed only to the extent that it infringes on the fundamental rights of others, including their right to free movement and to hold and enjoy property. ये तो रेलेवेंट होगा फॉर द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग. माय लॉर्ड फिर पैराग्राफ 3 भी पढ़ ले. जी सर. Protesters who obstruct people's rights to use roads and damage or destroy property must be proceeded against in accordance with law and held accountable. The Constitution earmarks the responsibilities of the Election Commission, which it must. I'm surprised you are citing this case. मैं तो हमेशा से इसकी मैंने आपको कहा था जी सर, हम तो पहले दिन से इसके साथ खड़े हैं. अगर हर इदारा अपने विद इन द डोमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते जो कुछ हम देख रहे हैं या जनाब के पास आ रहे हैं और कोर्ट साथ. अगला बताइए. मानो
مطلب اس میں جو میں صرف اس حد تک کرنا چاہ رہا تھا پیراگراف 2 میں the learned AGP tendered a document in a sealed envelope which spelled our eyes. وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس کیس کے لیے. ٹھیک ہے سر, میں جناب کو چکا اس حوالے سے. اور سر اس میں ہائی کورٹ کی کچھ ججمنٹس ہیں, PLD 2022 سندھ 264. جی 264 سر, PLD 2022 سندھ, PLD 2022 سندھ 264. یہ بھی مسنگ پرسنز کے متعلق ہے سر. اس کا لاسٹ پیراگراف نہیں, ایکچوئل کیا چیز پڑھی ہے مجھے سے 266 پہ لاسٹ پیراگراف ہے. 266 لاسٹ پیراگراف. The right to life is the most precious of all fundamental rights of the citizens. یہ تو جنرل باتیں جی جنرل, کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جی یہ دو ججمنٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں سر, وہ بھی میں ریفر کر دیتا ہوں. مسنگ پرسن پہ بتائیے. جی مسنگ پرسن, یہ اسی حوالے سے کہ جو ایک تو ہے سر PLD 2021 اسلام آباد پیج 1. جی ریلیونٹ پوئچ پیرا 3, 4 and 5. The incident, یہ وہ متی اللہ جان والا کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. The incident took place The incident took place during daytime in heart of the capital of Pakistan. Admittedly, some of the abductors were wearing police uniforms. Some of the vehicles used by them during the commission of the crime had an official appearance. The victim was a person engaged on the profession of journalism. The incident was caught on the CCTV installed at the premises of the school. Prima facie because آپ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کل تو آپ متی اللہ جان والا کیس نہیں بتا رہے تھے, آج آپ ججمنٹ سائٹ کر رہے ہیں. میں تو بتانا چاہ رہا تھا وہاں تک پہنچا نہیں تھا کہ حکومت میں کون تھا, پہنچا نہیں تھا وہاں تک. دوسری بات ہے کہ میں نے کہا یہ ذمہ داری پھر آپ حکومت جس کی تھی انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی. ان کی ذمہ داری, ان کی شاید انٹرونشن سے ہی یہ جلدی باہر آئے ہوں, ورنہ تو دیکھیں نا سر باقی لوگ 4.5 مہینے بعد عمران ریاض باہر آیا. نہیں, آپ کا غلط فہمی ہے. آنریبل کورٹ کی بھی انٹرونشن تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نو, یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. کچھ فہمی تو ہو سکتی ہے, غلط فہمی شاید نہیں. آپ سننے گے تو بتا دیں گے آپ کو. آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں, ہم بہتر نہیں جانتے. یہ غلط فہمی یا خوش فہمی یا جو بھی بات ہے, یہ ہو گئی تھی ریکارڈ, کیمرہ لگا ہوا تھا. کیمرہ لگا ہوا تھا جی, اس کا ریفرنس ہے جی. شاید کچھ اور نتیجہ نہ نکلتا. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں یو کاٹ وتھ یور ہینڈ ان دا کوکی جار, تو آپ وہ پھنس گئے تھے. سر عمران ریاض والے کیس میں بھی فوٹیج لگا ہوا تھا. پلیز ڈونٹ ٹیک دا کریڈٹ. It was egg on the face, and I'm surprised not a single head rolled as a consequence. When something has been established or by video recording an abduction taking place and presumably state agencies involved in the abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you're so helpless to govern, if you had taken stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. Dekhiye, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state come forward and say, offer rewards, these are the persons caught on TV, come and give us names? 2 منٹ کا کیس یہ سالو ہوتا تھا 2 منٹ میں. نہیں, دیکھیے یا تو ڈر لگے یا حکومت چلا لیں یا پھر بس ایش کر لیں. ہر چیزیں ہمارے پہ آپ ڈال دیتے ہیں کورٹوں پہ. یہ کیس 2 منٹ کا سالو کرنے کا کیس تھا. نو, ناٹ اے سنگل پرسن ریموو, ناٹ اے سنگل پرسن تھرون آؤٹ آف سروس. بس ٹھیک ہے,
अच्छा ओह तुमने उठा लिया सबके सामने, दुनिया ने देख लिया, नहीं बंदे को छोड़ दो। ये वजह थी, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं था। She was a single order saying take action against this person. बाद में बड़ी बड़ी लोग आके तकरीरें कर लेते हैं ना, जब जिनका वक्त होता है ना उस वक्त करके दिखाएं। अब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर मैं जाके तकरीर करना बैठ जाऊंगा कि जी ये मैं ये कर लेता वो कर लेता, आप कहें कि जी आज आपने क्या किया ये बताइए। सर मैं एक गुजारिश कर दूं, ये आपका जो केस है ना, दिस इज द आई थिंक द ओनली डॉक्यूमेंटेड केस। सर इसमें जो इमरान रियाज वाला केस है उसमें सर जेल से वो रिहा होते हैं, सीसीटीवी फुटेज के सामने गाड़ियां आती हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, उसका पूरा एविडेंस है। और अच्छा मुझे सर इस हवाले से एक इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूंगा, मैं सारे फैक्ट्स जनाब को पेश करूंगा। बहरहाल मैंने उनका पैगाम सिर्फ इस हद तक, उसका खुद फोन आया था तो मैंने वो जनाब को पहुंचा दिया। अब सर मैं एक गुजारिश करूं इस हवाले से, रुक जाइए सर, अब आप यहाँ रुक जाइए सर, या आपने ये प्लेटफॉर्म आप फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू, ये सुन लीजिए। इस केस से पहले एक और केस था जो कि अफसार आलम साहब थे, वो मीडिया पे बात कर रहे थे, हमने कहा हमारे सामने आके बात करें, क्यों ठीक है, वो आए सामने बात की, बिल्कुल क्यों वो कोई असर रसूख वाले शख्स मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं सर हैं, बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल में नहीं है। वो आए, उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सामने बात की। ये बात आपके जरिए कह रहे हैं, अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे किसी के लिए? ऐसे नहीं होगा ना। हमारा काम जरा सा देखें, आप यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा हेबियस कॉर्पस में प्रोड्यूस द बॉडी पेश कर सकते हैं ना, यही होती है। अगर किसी को कोई एलिगेशन अगेंस्ट समवन, जाए एफआईआर काटें, जाए सूट फॉर डैमेजेस फाइल करें। अगर मुझे अदालत बुलाएगी, कमाल है, आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो उनको ना बुलाना चाहते हैं ना उनका नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो आप बराए करम जो कल कर रहे थे, हमने आपको रिक्वेस्ट की थी मत करें, और वो नहीं कर रहे। ये मैं आपने नहीं ये प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने चुके कहा है सर। प्रोटेक्शन तो हमारे पास क्या कोई फौज खड़ी है जो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे? ऑर्डर तो फरमा सकते हैं ना सर, आपका ऑर्डर इज द फाइनल अथॉरिटी, जो वायलेट करेगा he will suffer, he will face the consequences। ऐसे कैसे बाहर जाते हैं वो? उनको अभी भी प्रोटेक्शन मिली हुई है क्या? जो उसका ज़ाहिर है उतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी, वो यहाँ के सच बोलेगा, फैक्ट्स बताएगा। 4.5 महीने जिस हालत में रहा, he was not able to speak even for few months। फिर बाहर जाएगा, यहाँ तो आके स्टेटमेंट दे देगा। शायद वो, बहरहाल मैं उस पर मजीद कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है, मैं इस पे आगे चलता हूँ। शाहीन साहब, यू आर अब नाउ आई विल यूज अनदर वर्ड, कैन यू प्लीड अ केस ऑफ अ पर्सन नॉट बिफोर अस? अगर बंदा इस काबिल नहीं है, who are you to plead his case? सर अगर कोई शख्स इस काबिल नहीं है, नहीं कि जो काबिल है, जिसका आपने जिक्र किया, उसके बारे में तो आप बात नहीं करना चाह रहे। मैंने तो जनाब को जजमेंट लिखाई है, खुद अर्ज की है ना, मगर आप जिम्मेदारी भी खड़ी करें ना। फिर जिम्मेदारी तो जनाब ने तायुन फरमाना है, नहीं हमारा देखिए अब आप फिर इसको वही बना रहे हैं सियासी अखाड़ा। हम ये कहते हैं माय लॉर्ड, कमीशन जब बनेगा, हद तक की जो पिटीशन थी ना जो आपने फाइल की, उसमें ऑफिस ऑब्जेक्शन के लिए वो लगी थी, वो दैट हैज बीन जी जी, वो तो फर्दर जो भी ऑर्डर्स होंगे वो होंगे, वेट फॉर सम टाइम। जी सर, अगर आप ये इंडिविजुअल केसेस करेंगे तो फिर हम ऑफिस ऑब्जेक्शन सस्टेन करना पड़ेंगे। हम आपकी पिटीशन एंटरटेन कर रहे हैं कि आपका जेन्युइन कंसर्न है मिसिंग पर्सन की, पब्लिक इंपॉर्टेंस और पब्लिक एट लार्ज। अगर आपके जहन में 2-4 ही लोग नहीं सर, नहीं ठीक है, नहीं 2-4 नहीं, सभी जो जिस के साथ कोई ज्यादती हुई है या मिसिंग में हैं या जिनके साथ कोई मिसिंग में रहे हैं, तो जनाब ओनली इन रिलेशन टू द सीएमए वो आपकी ऑफिस ऑफ। लेकिन फिर अब आप तशरीफ रखें, हम दूसरों को सुन लेते हैं ना। नहीं सर, नहीं मैं तो अपनी बात बस फर्दर एक्शन इज टू बी टेकन। वो देखिए ना, अभी कंसोलिडेटेड ऑर्डर होगा ना अभी जब सर मैं तो जनाब के सामने अर्ज करूंगा, जनाब ने फैसला फरमाना है ना कि मेरा कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जनाब उसको नहीं इस काबिल समझते कि उसको पार्ट ऑफ माई प्रेयर या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है और कौन सी नहीं होती, दैट योर लॉर्डशिप हैज टू डिसाइड। लेकिन मेरे जो सबमिशन है वो मैं जनाब के सामने पेश कर रहा हूँ। अब सर इसमें आपने कहा था केस लॉ साइड करना है। जी जी, केस लॉ एक जजमेंट में आपको अर्ज कर रहा था, वो 2018 सीएलसी कंसिडरेबल पीरियड उनको आने दें, उनको आपका तो ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया ना। जी जी हो गया, ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया, लेकिन मेन केस भी तो जनाब ने सुन लिया है ना। मैं मेन केस के हवाले से सिर्फ एक जजमेंट और दे देता हूँ, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, जस्ट फॉर कंसिडरेशन। नहीं पूरी बात कर लेना जी। तो शेख रशीद साहब ने आपको क्या कहा?
مجھے کچھ بھی نہیں کہا. جس ایک بندے کا مجھے کال آئی میں جناب کنفرم کر دیا, کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں فلاں جگہ گئے, آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود کیوں نہیں کہتے, اتنے بڑے خود انہوں نے کہا تو ہے لیکن شاید اس قابل نہ ہوں کہ اپنی وہ بات نہیں کر سکتے, تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ بات کریں گے؟ جب الیکشن ہوا تھا, جب ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا تو وہ تو آگے کورٹ, جب دھرنا کیس تھا تو وہ تو آگے. اب آپ ان کے اسپوکسمین کدھر سے بن گئے ہیں؟ وہ سر یا تو سوری ٹو سے نا, پلیز بیکم اے پروفیشنل, obtain a وکالتنامہ and file a وکالتنامہ. Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want, they can come to court. Yes. And when they don't want, don't come to court. And then you become their spokesperson. اگر پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے اٹھایا جائے گا, مسنگ پرسنز میں شامل کیا جائے گا, تو ہم جناب کے سامنے ایک ارزداشت تو پیش کریں گے نا. ڈیٹیلز تو وہی دیں گے نا انسیڈنٹ کی. ابھی تک تو کچھ نہیں پتا, آپ بھی جو بتا رہے ہیں آپ کو ایکچوئل فیکٹس تو نہیں بتا. ہم نے بھی جناب سے جو گزارش کی ہے, ہم نے کہا ہے کہ اس کمیشن کو یہ امپاورڈ ہوگا, وہ جو سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے گا, اس کے پاس ساری ایویڈنس آئے گی, ان کو بلایا جائے گا, وہ کوئی ایویڈنس دیں گے تو ایکشن ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. یہ لے تو آپ کی پٹیشن پہ نمبر پڑ رہا ہے نا, تاکہ اس کو سنا جائے whether this is maintainable or not, or whether the commission is to be made or the earlier commission is totally ineffective. یہی میری سبمیشن ہے جناب کے سامنے. جب اس پر آپ تشریف رکھیں ہم ان کو سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, بس صرف ایک ججمنٹ سے ریفر کر بنانا چاہ رہے ہیں, پھر ہم نہیں اجازت دیں گے آپ کو. نہیں سر, نہیں میں نہیں بنانا چاہتا, میں تو I would be the last person to doing it repeatedly. آپ کو last time بھی request کی تھی, please don't do this. نہیں سر, جناب نے میں نے تو صرف ایک ججمنٹ سر ریفر دیکھ لیں سر. 2018 CLC 1858 ریلیونٹ اس کا پیرا 17 ہے سر, ایٹ پیج 1358. جی سر, 1858 پیرا 17 ریلیونٹ ایٹ 1869. ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی سر, اس سے کون انکار کر سکتا ہے. جی چلیں, can we go to the next case. تھینک یو. کتابیں اٹھا یہ امینہ مسعود صاحبہ, جی آپ ان کی پٹیشن نمبر ہے 50. تھینک یو مائی لارڈ. ایک سیکنڈ, آپ کی ذرا فائل نکالنا ہے. CP 50 ہے. آپ زبانی بتا دیں کیا باتیں ہیں. مائی لارڈ, ہماری میرے شوہر جبری گم شدہ ہوئے تھے 2005 میں, تو اس وقت سوموٹو نوٹس ہو گیا تھا, افتخار چودھری صاحب نے لیا تھا, اور ساتھ ہی ان کے دوست فیصل فراز بھی جبری گم شدہ ہوئے ان کے ساتھ. تیسرا ایک انجینئر تھے ایبٹ آباد سے. 2005 میں کس کی حکومت تھی؟ 2005 میں پرویز مشرف کی دور میں ہوا تھا یہ. اس کے بعد پھر سو موٹو کے تحت ہی تقریباً آل پاکستان سے 41 آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ میرے شوہر جی بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کے کالجز ہیں اسلام آباد میں. ریکور ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جی ریکور ہوئے ابھی نہیں, ابھی تک نہیں ہوا. نہیں تو آپ کے پاس بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ کو انٹرسٹ کیا ہوگا اسٹیٹ کا ان کو اٹھانے میں؟ ایلیگیشن آپ کا کیا ہے؟ ہمارا تو یہی ایلیگیشن ہے کہ جو لیٹر آن جو لوگ ریلیز ہو کر آئے انہوں نے ایویڈنس دی کہ میرے ہسبینڈ کے خلاف تو ابھی تک کوئی ایلیگیشن نہیں. ریزن کیا تھا؟ لوڈ کوئی ریزن نہیں ہے. nobody told me ever کہ کوئی ریزن ہے. دیکھیں اسپیکولیشن تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ زیادہ بولتا ہے حکومت کے خلاف, اس کو اٹھا لیا, مطلب یا یہ پرویز مشرف کے ساتھ کوئی ان کی دشمنی تھی, اس کو اٹھا لیا. کوئی ریزن آپ کے ذہن میں ہے؟ لارڈ میرے ذہن میں تو کچھ نہیں آتا, کیونکہ مائی فادر ان لا از آلسو ملٹری پرسن, از اے کرنل ریٹائرڈ, اور وہ اس وقت مشرف کے سینئر بھی تھے. مطلب I'm just saying that why you think the state was involved, or you're not alleging it's a state? I think it's
स्टेट बिकॉज जो भी लेटर ऑन 2007 में 2006 में 11 में 8 में जो लोग रिहा होकर आए उन्होंने इसकी एविडेंस दी. The star witness was Imran Munir. देखिए 2-3 क्या हो सकती ना, एक तो मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो गलत फहमी में किसी को उठा लिया, एक ही हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है. तो फिर द मिनट दे रियलाइज नहीं ये तो गलत उठा लिया, इसको छोड़ दो. या कोई मे बी ट्रम्प्ड अप चार्ज या जो भी उनके जहन में हो, जिसने भी ये काम किया कि जी ऊपर से हुक्म आया है कि इसको उठाना है इस वजह से, ये ज्यादा एक्टिविस्ट है, ये है वो है. तो आप जो बता रही हैं कि आपके हस्बैंड बिजनेसमैन थे, तो मैं जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजह क्या हो सकती है. 2001 से लेके यहाँ पे एक वॉर एंड टेरर या तो आप कहें कि वो सपोर्ट कर रहे थे किसी को, मुजाहिदीन को, या क्या, तो फिर तो बात समझ आती है ना. वो तो एक सोशल वर्कर भी थे, उनका एक हॉस्पिटल भी था, वो आज भी चल रहा है जो अपने. I'm just trying to understand. I'm not saying कि नहीं उठाया है, मगर मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि वजह क्या हो सकती है. देखिए जब तक इंसान को वजह ना पता चले तो फिर कल्प्रिट जो क्रिमिनल केसेस में ऐसे ही होता है ना कि भाई किसको फायदा हो रहा है तो उस तरफ जाती है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. ठीक है कि ये इसका कोई जातियात का झगड़ा था या कोई जमीन का तनाजा था या वो उसके खिलाफ बात करता था, तो उससे कड़ियां जुड़ती हैं. हाँ, ये पॉसिबल परपेट्रेटर्स हो सकते हैं. तो मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई was he member of some organization which government did not like or any case like that? No sir, इस तरह की कोई बात नहीं थी. मेरे फादर इन लॉ ने जो क्या उम्र थी जब वो he was 41. आपका ये केस कमीशन में चल रहा है, ये डिसअपीयरेंसेस का जो कमीशन है, आपने कोई कमीशन ने 2013 में इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था. क्या उसका क्या ऑर्डर क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने तो इनको डेड डिक्लेयर कर दिया था. तो ऑब्वियसली क्योंकि है ऑर्डर आपने लगाया इसमें? सर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑर्डर था बिकॉज आपने लिखा है कि अर्लियर प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू किए हैं, 600 प्रोडक्शन ऑर्डर कमीशन ने इशू किए थे. बिल्कुल. That is why I'm asking. Where was he last seen? He went from home किस जगह? on 30th July 2005. रावलपिंडी घर से निकले हैं. हाँ. और उनके दोस्त पे बस स्टॉप पे उनका वेट कर रहे थे. दोनों ने डेवू बस ली है. हाँ. टू मीट. कहाँ जा रहे थे वो? पेशावर जा रहे थे दोनों. अच्छा, क्यों? उनके एक दोस्त है अब्दुल गनी, उनके साथ मिलने के लिए. तो जब उनसे भी राब्ता किया गया, अब्दुल गनी भाई से भी, तो उन्होंने भी कहा कि वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे. आप किसको सस्पेक्ट करती हैं? एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी हैं, कुछ हमारी एजेंसीज भी हैं, तो आप किसको सस्पेक्ट करती हैं? मतलब लास्ट आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? जो एविडेंसेस हमें मिले थे जो कि रिलीज पर्सन्स की तरफ से थे, तो उन्होंने तो यही बताया था कि वो आईएसआई की कस्टडी में थे. उन्होंने देखा था जी. और वो ईद के दिन थे क्योंकि उनको जानते थे? जानते नहीं थे, मगर उन्होंने फिर भी उनका नाम पूछा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और बाहर आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कि उनके लॉयर ने मुझे बताया कि इस तरह से इमरान मुनीर ने मसूद जंजुआ को देखा है, और उन्होंने फिर वो सारी चीजें सामने आई. इस बात को कितना अरसा गुजरे? इसको 2007 में ये हुआ था, और उस वक्त 2005 से लेके 2018 तक तकरीबन मैंने 749 सी डाली हैं HRC 965 में, और जो कि सिर्फ मेरे हस्बैंड से पर्टेनिंग नहीं थी. फिर एक जब JIT बनाते हैं ना जी, तो JIT में आपने कभी अपीयर हुई, पार्टिसिपेट किया JIT में? सर सब कुछ हुआ था मगर JIT में ISI के और IB के सारे मेंबरान होते हैं ना. बिल्कुल. पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है उसमें, SSP लेवल पे या DIG लेवल पे. तो 8-10 लोगों की जो JIT बनती है, कभी आप पेश हुई हैं JIT में? बेशुमार दफा पेश हुई हूँ, रावलपिंडी में, CPO के ऑफिस में, कमीशन के अंदर, और हर चीज. सर उस वक्त ये होता था कि तमाम केसेस जो कमीशन में चल रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे थे. तो उसमें ये हुआ कि जब वहां से डिस्पोज हुआ तो यहाँ से आपने अभी कहा कि खुदा न खास्ता वो डेड डिक्लेयर हुए हैं, तो वो क्या रीजन थी उसकी?
उनका तो यही कहा है कि वो वज़ीरिस्तान में उनको जो है तालिबान ने और इस तरह एंटी स्टेट एलिमेंट्स ने मार दिया, बट ये कि उस वक्त के जो जजेस थे, जिस तरह जवाद ख्वाजा वो साहब क्या थे, गए थे बलूचिस्तान? नहीं, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया था क्योंकि वो उसके ऊपर कोई ऐसी एविडेंस नहीं दे पाए थे, ना वो ये कह पाए थे कि कहाँ पर उनकी कब्र What do you है. want us to do? My lord, I just want you to take up the cases of those two individuals, my husband and Ms. Faisal Faraz. करें क्या, बताएं ना. जो उनकी जो, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो कमीशन में तो वो सारे केस डिस्पोज ऑफ हो गए थे आप 2018 हमें में. बताएं ना, कमीशन को छोड़ दीजिए ना. अब आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि My lord, ये देखिए, एक दो तीन बातें ना. एक तो ये आपने इस मौजूदा हुकूमत या इस मौजूदा हुकूमत के जितने भी अहम एहलकार हैं उनके खिलाफ तो एलिगेशन है नहीं. अब आपका एलिगेशन है कि 2005 में उनको गायब हुए वो 30 जुलाई 2005. 30 जुलाई 2005. तो इस बात को कितने साल हो गए? 15, 25, तो कितने साल हुए? 18 साल. जी सर, हाँ, 18 years हो गए. 18 साल. उस वक्त 40 years एज थी उनकी. अब 18 ईयर्स हम कोई ऐसी चीज बताएं जो कि कुछ हम मदद आपकी कर सकें, मगर कोई क्या हम कैसे कर सकें? कोई या तो देखिए, आप कभी होता है ना कि जी कोई तंजीम से वाबस्तगी थी, ये कोई गलत बात तो नहीं, तंजीम इंसान ज्वाइन कर सकता है, इट्स फंडामेंटल राइट अनलेस इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई और बिना पे जी हुआ हो तो कहीं शक जाता है ना इस तरफ या उस तरफ, या फिर वो गलत फहमी में उठा लिया हो या फिर छूट जाते हैं आमतौर पे लोग. गलतफहमी हो सकती है क्योंकि जब मेरे फादर इन लॉ टॉप ऑफिशियल से मिलते थे, माय फादर इन लॉ, आपने कहा आपका तो कनेक्शन भी है आर्मी से. जी, फादर इन लॉ आपका वाज, क्या कनेक्शन है आर्मी से? my father-in-law is a colonel retired. Actually, he will also be very concerned about his son. Of course, and for this matter, he met the president. क्या मिला उनको? क्या परवेज मुशर्रफ से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ISI के जो DGs थे इनसे मिला क्या मुलाकात. उनको? मिला, बताया क्या तो किया? उन्होंने कि ये उनको यही गलत बस आदमी है, हमने इसको उठाया हुआ है या नहीं, हमारे एक पास ऑफिशियल स्टेटमेंट हमेशा उनको मिली कि हम अभी हैव नो इंटरेस्ट इन योर सन, वी हैव नो इंटरेस्ट, हमें इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, हम आपके बेटे को क्यों पिक करेंगे. फिर जी, तो फिर हम क्या करें? कुछ आप बताइए ना कि जब वी आर हियर टू हेल्प, ठीक है, हमने ये केसेस उठाए बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू अस, ठीक है, बट एंड दिस मस्ट स्टॉप. एग्जैक्टली. And there used to be much more missing persons, and I think अब शायद नहीं हो रहा है My lord, जो पहले होता था. I don't know, I may be wrong. जी, मगर I've been Chief Justice Buluchistan as well. So, but तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो हम कर सकते हैं. आप क्या, हम हुकूमत से पूछ सकते हैं, मगर प्रॉब्ली कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा उधर से. अगर सेकंड बिल्कुल. मैं ये नहीं चाह रही कि वो वाली जो जिस तरह आप से बताएं ना क्या चाहती हैं, वही went हम through quite करेंगे. a lot of torture over, You have a lot of experience. you know, You have more experience than us. exactly. तो अब आप बताएं, what shall we do for you? My lord, for my case, if for my husband's case, if you can, अब कोई ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट है, प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है कि कोई उनसे कोई इस तरह की आप बात बताएं कर ना, वो आप सके. हम पे छोड़ दीजिए ना, आप हमें सिर्फ बताएं, बाकी हम काम कर लेंगे. तो दोबारा भी GIT कॉन्स्टिट्यूट I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself. कि क्या कहाँ चले गए, अगर वो दाना वास्ता उनकी डेथ हो गई है, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में मिलिट्री से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री से, ऑफ कोर्स मिलिट्री से, जनरल आसिम मुनीर से ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ मेरे हस्बैंड को, कहाँ चले गए. आपने नाम लिया जमाने में तो शायद वो मेजर या भी होंगे, आई डोंट नो, कैप्टन होंगे, so he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan, and they can, if they have Please, some information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But for this petition is also about. नहीं, हम उन पे भी आते हैं ना, we are पहले concerned आपका about पर्सनल one. कंसर्न तो हो जाए ना, वो तो फिर बात की बात है. Can we have a report if there is some information, My lord, I have taken down the details. and if whatever has happened, all she says is, if I can know the truth of the matter. Yes. And I don't see why this government or those in charge of
various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. There's no reason why they want to, and there's every reason that if they have some information, they will tell you. So can you sort of, we'll pass an order, but unless you add something. My lord, ये भी देख लीजिएगा साहब, अगर there is an opportunity or option of constituting second GIT, अगर GIT में होगा तो उसमें कई लोग होते हैं JIT में क्या है वो देखिए, वो JIT देखते हैं, इनको कम से कम जवाब दे देंगे। वो एक खाना पूरी हो जाएगी, कुछ उसका इफेक्ट नहीं Exactly, होगा. उसमें my lord कुछ भी नहीं होगा. It will Because be she's gone going through the same process. pain, yeah. Now, if it can be once again done with fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if they will let the truth be told, even if something has been done wrongly, let it be disclosed. my lord, ठीक है? my lord. तो ये जरा आप देखें that she has been in the forefront, not only for her own husband, but for others also. Appreciate that. ठीक है? My lord, तो the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. my lord. ठीक है? These are the, or any other, It's Ministry of Interior essentially. and or the Ministry of Prime Defence, Minister's Office. जी, because she says that she's alleging it against Pervez Musharraf. So that comes Ministry of Defence. was president at that time, but Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defence. So let it be taken seriously, yes, and we expect that if can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the government came and absolved itself. They said, "उन्होंने किया था, बता दिया." तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise, there's a question mark hanging all forever and ever. My lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet Yes. Sheriff at that time. Yes. And then He said that we have no interest in and they him. said, all right. So she said so. You've heard it correctly. So I Still, a person may still not tell the truth. so I will furnish report on A that. lot of time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, if nothing more than just the truth. ठीक है? My lord, I am noted. अच्छा, अब बाकियों का केस बताइए आप. my lord, जो फर्स्ट तो यही है कि ये बताइए कि मिसिंग पर्सन्स के जो आप तो काफी इससे मुंसलिक रही हैं, जी जी ये सबसे ज्यादा कब हुए थे मिसिंग पर्सन्स? ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा हुए थे, और फिर उसके बाद कंसेक्टिवली जब ये पीपल्स पार्टी का दौर आया तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई बल्कि चलती रही. Similarly in PMLN, BTI and then coalition government and then caretaker. तो throughout the history जब से 9/11 से लेके आज तक ग्राफ ऊपर नीचे तो होता रहा है. आजकल भी ये बात हो रही है या नहीं? जी सर, हो रहा है, आजकल भी हो रहा है. आप एक सेकंड ठहरिए ना, इसको बात करने में. जी बताइए. जी सर, आजकल भी हो रहा है, ये केसेस आ रहे हैं, पोस्ट डिसअपीयरेंस हो रही है. नहीं, जैसे शोएब साहिब साहब कहते हैं ना, किसी को उठाया फिर छोड़ दिया, वो वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं. हम वो वाले बात कर रहे हैं Long term जिनको की. छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं. जी जी ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए, हाँ जी खुद आ गए, दस्तयाब हो गए. जो बात है वो एक अलग इशू है. बिल्कुल. हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वो हेबिस कॉर्पस की जुरिस्डिक्शन है. When a Exactly. person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. जी Then jurisdiction becomes criminal or civil. ठीक है, जो habeas corpus की jurisdiction limited होती है, produce the person. ठीक है, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. तो Fine. अब हमें बताएं, there are missing persons who have been picked up and are still missing. ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर, हो रही है इस तरह से. एंड नाम है कि लोगों के वो किधर हैं?
माय लॉर्ड क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो नेचुरली सरकार से हम पूछेंगे तो भाई फला मोहम्मद इदरीस कहाँ है, वल्द फला फला, तो वो फिर हमें जवाब देंगे ना। Exactly. अगर हम एक जनरल बात कहेंगे वो क्या जवाब देंगे हमें? माय लॉर्ड, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये कोर्ट, क्योंकि हमारी की उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता रही हैं और तकरीबन 18 में से 15 साल मैं यहीं पर पेश होती रही हूँ, और इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए अब हर चीजें दौर बदलते जाते हैं ना। जी कुछ लोग मिसिंग पर्सन आज भी मगर वो उठाए गए हैं, आपने कहा 2005 में या 2002 में, जी ठीक है, तो वो यकीनन इस हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं ठहरेगी ना। तो Exactly. फिर भी अगर आज ये गलत काम कर रहे हैं तो हम उनको रोक सकते हैं। दो बातें हो गई, देखिए इसको जरा सा क्लैरिफाई कर लें। हमने पहले भी बात की थी कि अगर हमें टाइम नाम दे दें और पीरियड्स दे दें ना, जी तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो हो गए पुराने मिसिंग पर्सन्स, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। जी एक दूसरा है कि ये चीज को रोका जाए, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल एक है उनको दस्तयाब करवाया जाए, वो अलग हम जरा उसको करना चाहते हैं, लॉजिकली चलना चाह रहे हैं। तो हम कम से कम पुराना तो नहीं मसला हल कर सकें शायद, अगर आज वाला तो हम कर सकते हैं ना, रुकवा तो दें ना सारी बातों को, मिसिंग पर्सन को रुकवा दें। बिल्कुल सर, मैं यही चाहती हूँ कि आप जब इसकी कॉग्निजेंस लेंगे तो इसकी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होगी कि क्या ये स्टेट तो की हम पॉलिसी तो नहीं बनी, आज ही हम इनको हुक्म देते हैं कि भाई ये रोक पॉलिसी किसी को रोक ना दी उठाएं। जाए कि लोगों को उठाना कम से कम लिस्ट स्टॉप हो जाए, तो फिर Attorney हमारे पास General? सिर्फ पिछले ही रह जाएंगे जिनको रिकवर करना होगा। Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is. But if you give this statement today and then something happens tomorrow, My lord, then consequences will follow. You have to carefully make the statement. My lord, this is a statement of law, and It is No, better but to we- take some instructions. We want it in writing. all right, Now, who will give this statement? my lord. Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. It is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan, So then I think. not on his own behalf. Naturally, he may be retired tomorrow, transferred tomorrow, so we can't hold him responsible. But it will be responsibility of the government of Pakistan. Then I think. This country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was a pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. अब भी आपने अखबार में पढ़ा कल या आज के अखबार में था कि 6 नाई को मार दिया वजीरिस्तान में। देखिए ये जहनियत, जो लोग कत्ल करते हैं उनको कोई डर नहीं है, खौफ नहीं किसी चीज का। इस दुनिया में तो चलें वो शायद कानून की गिरफ्त में ना आए, पर आखिरत में क्या करेंगे? मतलब आखिरत में क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? तो देखिए ये स्टेट को भी ये जो माइंडसेट है उसको चेंज करना होगा। ये कोई कोर्ट एक फैसले करके कुछ नहीं कर सकती है। That's right. जब तक ये मशीनरी इस माइंडसेट को चेंज ना करे। और जी ये पता नहीं क्या करने आ रहे हैं। अब आपने बलूचिस्तान में भी लोगों को कत्ल किया जा रहा है एथनिसिटी ग्राउंड पे।
देखिए, ये कोई सोल्यूशन आज तक किसी ने कोई कत्ल व गारत से कुछ पाया नहीं है। ये कोई जेन्युइन आपकी बात है, आप आइए पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शन करवाइए। जब इलेक्शन हुए थे लास्ट वाले, मैं था चीफ जस्टिस बलूचिस्तान में, बड़ी मुश्किल से हमने सारे इलेक्शन कराए और कुछ एलिमेंट्स नहीं चाहते थे इलेक्शन हो, because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. एक अखबार की सुर्खी लगी, ऑर्डर पास हुआ, इससे कुछ नहीं होगा। I think the state Some needs to be definite inclusive. statement should be given by you in writing by the government. ये कमीशन जो था मिसिंग पर्संस का, ये वजूद में है या नहीं? Yes, sir. Yeah. कौन हेड कर रहा है? It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. 11. So he should be now, what, 77, 78? 77? आप आए हुए वहाँ से, कमीशन से आए हैं, रजिस्ट्रार हैं आप कमीशन तो आप के। सामने आइए। ये कितने लोग हैं इस कमीशन के मेंबरान? सर यहाँ पे जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं और साहब शरीफ विर्क साहब, रिटायर्ड शरीफ विर्क साहब, मोहम्मद शरीफ विर्क, मोहम्मद शरीफ विर्क, ये कौन है? ये रिटायर्ड आईजी है जी। और कोयटा में है हमारे जस्टिस अमानुल्लाह खान यासीन जई। जी, ये वॉलंटरी है या इनको तनख्वाह मिलती है? सर हाँ तनख्वाह मिलती है सर, हाँ? तनख्वाह मिलती है सर। सेक्रेटेरिएट है पूरा। इतना आपका बजट कितना है? सर मैं अंदाजा नहीं होता, बताओ सेक्रेटरी को ही, मुझे पता नहीं, मेरा ख्याल 4-5 करोड़ का होगा। तो आप करते क्या हैं? रजिस्ट्रार हूँ सर मैं कमीशन का। नहीं, तो ये बस ये सर तनख्वाहें लेने के लिए कमीशन है या कोई और काम नहीं सर कर रहा है? नहीं काम करता है सर कमीशन वाला। बताए ना। कराची में हमारे जस्टिस आपकी एनुअल रिपोर्ट आप जारी करते हैं, मंथली करते हैं, करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, मंथली भी करते हैं। कितनी रिकवरी कराई है आपने आज हमारी तक? तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी है। तो हमने बलूचिस्तान में रिकवर किए, वो भी आप अपने पास डाल देते हैं कि हमने रिकवर किया है। नहीं, कितनी रिकवरी मंथली, क्या है रेशियो आपका रिकवरी का मैं अभी आपको पर्सन्स का? ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट जनाब को देता हूँ। लेटेस्ट नहीं, वैसे ही बता दीजिए ना, महीने में कितने रिकवर करा, कितनी दफा मीटिंग मैं बता देता हूँ। नहीं, बात सुने, आपकी मीटिंग महीने में कितनी दफा डेली होती है सर। क्या डेली होती है? डेली होती है, उसमें लोग आते हैं, मुतासिरीन के घर वाले, सारे सब डिपार्टमेंट्स आते तो हैं। फिर रिकवरी कितनी होती है महीने में, क्या एवरेज है? यही मैथ्स करने लगा हूँ सर। इस महीने में हमारे 46 जो है ना, ये डिस्पोज ऑफ हुए, ये रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ। और 46 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकवर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजी के दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं। सर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सर ट्रेस्ड कह लें, ट्रेस्ड ट्रेस्ड Traced. किधर आपकी रिपोर्ट किधर है? ये है ना bottom में। ये कागज का टुकड़ा है, दिखाइए क्या चीज है। ये देखते हैं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है ना, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर वो बाकी है, ये लिखा है ये आप आज कितने मिसिंग पर्सन्स हैं आपके रिकॉर्ड में? ये लिखी हुई फिगर टॉप पे ना, बता दीजिए ना। ये जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2022 7001, डिस्पोज ऑफ से क्या मुराद है भाई? या रिकवर हुए या नहीं हुए? सर मैं मुख्तलिफ किस्म आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए ना। देखें, जब रिकवर होते हैं, बहुत से वो रिकवर होते हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो बता देते हैं फलाने केस में कस्टडी में है। असल में सर ये 4 ये मतलब ये रिपोर्ट इसमें नहीं। अब आजकल मिसिंग पर्सन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो वो तो हमें नहीं पता, हमारे पता जो केस आता है उसका पता होता है हमें। आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आपके पास आजकल केसेस आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर। आपका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सर ये G91 में सर। हाँ, G91। ये क्या घर है? नहीं सर ये सिविल डिफेंस बिल्डिंग है सर, अच्छा, उसके अंदर है। नहीं तो आपके पास फॉर इंस्टेंस दिसंबर 2023 में कितनी केसेस आए हैं फ्रेश? सर ये बताने लगा 46 केस आए हैं सर। फ्रेश? जी फ्रेश।
अच्छा, इनका क्या बना? तब ये प्रोसेस शुरू कर दिए ना इसका हमारा। उससे पहले हम JIT बनवाते हैं, उसके बाद AIT क्या चीज है? ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन ये टीम। क्या चीज है बताएं, कौन होता है उसका मेंबर? उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन होते हैं और साथ में रैप होते हैं IB के, ISI के, MI के और होम डिपार्टमेंट के। इसके 5-6 लोग। ये आप बताएं, ये संजू आप नहीं इस कमीशन के सामने? यस माय लॉर्ड, जब ये बना था 2011 आप में, इससे मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन है? कोई नहीं है हम लोग। हम और लोग से मुराद हम और तमाम जो विक्टिम्स हैं जो वहाँ पे पेश आप भी केस में हैं इसमें? आपके साथ इनाम साहब जो खड़े हैं, आप भी इस केस में हैं? I'm assisting, madam. I'm working with her, sir. ये आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? Not at all, sir. हाँ? Not at all. कोई मुतमईन नहीं है sir. Dispose of किए हैं। Honorable ने बड़ा। ये एक सेकेंड, तो लंबी बात नहीं करें, आप मुतमईन हैं या नहीं है? Dispose of जो है इसमें। हाँ, आप सिर्फ हाँ या ना बता दें। Satisfied, sir. Not at एक all. सेकेंड, एक सेकेंड, इत्तेजाज साहब आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? छोड़ दे। नहीं नहीं बस सिर्फ पूछते मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? नहीं नहीं, मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? हद तक है। नहीं आपसे सवाल से भी मुतमईन, बस बस ओके। अच्छा, एक रजिस्टर ये यहाँ जो आज जो केसेस हैं, कोई मुतमईन है कमीशन से या नहीं है? नहीं, मैं भी नहीं। कोई मुतमईन नहीं। अच्छा, ये 2023 तक आपने 10,088 केस लिखे हैं। ये कब से शुरू हुए हैं 10,088? सर ये टोटल हो गए जो नहीं, हमारे एक बार पास मेरा सवाल सुने। 2011 से सर। सुने, नहीं, आप देखिए रजिस्ट्रार हैं, आपके पास माय लॉर्ड जो पूछ आप रहे हैं ना, रजिस्ट्रार हैं, आपके पास एक- फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। देखिए एक नंबर से हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें नाम से है। ठीक है, फला शख्स मिसिंग हुआ इस तारीख को, आपके पास रिपोर्ट आई इस तारीख को, ठीक है, वो उस वक्त का जमाना मतलब ईयर हमें पता चलेगा ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उधर जाती है। तो ऐसा डेटा आपके पास है? ऐसी है, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया सारा। सुने ना, आप ये कॉस्मेटिक वैल्यू ऐसी बनी हुई है, आपने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस अप टू दिसंबर 2023 10,088। ये 10,000 कब से शुरू हुए हैं ये केसेस? ये अब इनके हस्बैंड तो सर ये 2005 से पहले मैं अर्ज करता हूँ, ये पहले एक कमीशन एक बनाया था सुप्रीम कोर्ट आपको ने। ईयरली बनानी चाहिए ना, जो पिछला डिस्पोज हो गया, बैकलॉग पूरा लेके चल रहा है। आप यही नहीं पता 10,000 केस कब से पेंडिंग है आपके नहीं पास? सर, इस पेंडिंग वो लिखे हुए नीचे जो पेंडिंग इस वक्त है वो भी नीचे लिखे अच्छा, हुए। ये 3 लोगों का कमीशन है, मोहम्मद शरीफ विर्क, अमानुल्लाह यासीन जई साहब और जावेद इकबाल साहब। और जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और कौन? जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और डेली असेंबल होते हैं, कैसे आते हैं कराची से? नहीं, वो कराची में करते हैं, उस इनका केसेस वहाँ करते हैं। अलग अलग करता है, अलग अलग बलूचिस्तान के जो है वो कोयटा में होते अच्छा, हैं। और कोई रिकॉर्ड रखते हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के कौन है? वो इस्लामाबाद से ही जाते हैं, हमारे जय साहब जाते हैं या शरीफ विर्क साहब जाते हैं। और पंजाब से? पंजाब में भी, पंजाब और ये फ्रंटियर। यही पर हैं फिर? जी 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 5 लोग हैं, जी। 4 लोग हैं? जी हाँ, हाँ 4 हो गए जी, बिल्कुल। आर दे पेड और दे वॉलंटरी वर्क? ये सब Paid, पे they are पे paid. होते हैं सर, हाँ? पे करते हैं सर। अब जो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हैं उनको हाई कोर्ट का पैकेज जो होता है वो मिलते हैं। अच्छा, तो वो तो उनको पेंशन मिलती है वैसे ही। पेंशन तो लेते हैं ना सर। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह है, जो हाई कोर्ट से रिटायर है उनको हाई कोर्ट की तनख्वाह, यही है तो ना? उनको क्यों मिलती है तनख्वाह? के अलावा हाँ? क्यों क्या जवाब है? नहीं नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही बात। हाँ, ये अटॉर्नी जनरल साहब से। उनका पैकेज तो वही होता है ना जो वो लास्ट अटॉर्नी जनरल सर्विस कर रहे होते हैं। अटॉर्नी जनरल, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कमीशन? My lord, I do not, and it's a bit of a news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up the presidential order related to the terms and conditions of judges. थोड़ा सा जोर से बोलिए। I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges, It is whether quite post-retirement can they, if they are required to do any दोनों work. जो बात कर रहे हैं, दिस इज कॉमन प्रैक्टिस। कोई भी रिटायर होता है जब नई जगह जाता है उसको वही पैसे मिलते हैं। हाई कोर्ट से है तो हाई कोर्ट की है, एमलमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है। दिस इज एन एडिशन टू द पेंशन। Right. So I was not. No, but there is another order, I'm aware of it, that if a government gives an assignment to a retired judge, That's what I was. they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is, because I recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But if a government assignment, then you're not paid for that. That is part.
वो कौन सा ऑर्डर है? ये तो कह रहे हैं इनका बड़ा बजट भी है। आपसे ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है? इंटीरियर सर। नहीं, इनसे पूछ रहे हैं आप कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं? वैसे बजट हमारा थ्रू इंटीरियर आता है, अदरवाइज दूसरा इंडिपेंडेंट ही है। इंडिपेंडेंट अलग बात होती है, गवर्नमेंट में किसी जगह तो आपको बजट जाता होगा ना, मीडिया में, फाइनेंस में, किसमें, ह्यूमन राइट्स में, लॉ में, किधर ऑफ इंटीरियर आता है बजट हमारा। हमारे एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इस वक्त किया है कैबिनेट ने। आपको कुछ पता है इसके मुतालिक? खोसर साहब आप कुछ जिक्र कर रहे थे अभी। आपकी सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है, बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि कहाँ लिखा है आपने? आपको पता है? मैं चूंकि वकील हूँ ना जी, अच्छा ये मैंने राय की। अच्छा मैं दे रहा हूँ। अच्छा वो बंगाली जी सारा आज तक जो कुछ उन्होंने एक्सपेंडिचर हुआ है वगैरह जो करते हैं बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगे और उनकी आउटपुट क्या है, स्टार बनाया हुआ ये कौन से केसेस जो क्लोज नहीं है रजिस्ट्रार साहब। ये पॉइंट कैसे हुआ? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी, my lord, it was appointed under Commission of Inquiry Act 1956 and 2011. Forever? जी, वो फिर एक्सटेंशन हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है। खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? My lord, this is SRO 149 था 2011. 134 of which file? ये है my lord, I have this copy of the कह रहे notification. हैं हमारे पास है। कौन सी ये फाइल बताएं आप, जरा नंबर बताइए फाइल का। दे दे दो 161 देना, मुझे देना जरा। उनका, उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा, ये गजेट नोटिफिकेशन है। My lord, ये जरा पढ़ ले आप, कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन। My lord, this is SRO 149 of 2011, dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced, and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a commission of inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following, namely, Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Balochistan High Court, Mr. Muhammad Sharif Virk, IGP, retired Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar member. 2. ये पेमेंट की किधर है बात? बजट और ये The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely. ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था नहीं, कमीशन। प्लस कर दिया है टू ट्रेस वेयरअबाउट 30 इनटू, वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे। अच्छा, फिर इसका वो किधर है पैसे? My lord, it's I mean, there's only this Commission will have its says that independent Huh? secretariat with auxiliary staff. That's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए। I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. ये 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था, तो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं। Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it was for Kamal Mansoor Alam, जो कि 136 persons My lord, and जी। for 6 months. Exactly. Unless extended by further order. तो वो extend lord, होते होते वो that is now कब बना है? 2011 में। नहीं, tell us. आप हमें बताएं, जरा ज़बानी बताएं। Sir, this is a commission which was formed in 2010
the only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sahab. If your lordship may see the paper book on page 1, I've attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that, that contains really most of the answers to this issue. Page? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? जी जी. Retired, he, as your lordship is, he was illegally removed by Pervez Musharraf. He was illegally removed by Pervez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath. Achha, okay. No, then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was... No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप इंडेक्स ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल केसेस के हवाले से क्या हुआ, उस पे क्या रिकमेंडेशन हुई, उस पे क्या कॉम्पनसेशन अवार्ड, वो इस रिपोर्ट में दी गई है. I would not attach the entire report, sir, with the annexures, but I'll place that before your lordships. और then it was substituted by Justice क्या नाम है? Javed Iqbal. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where? Page? Sir, if your lordships may kindly see. ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल थी, ये पब्लिक कब हुई है? सर, ये फिर पब्लिक तो नहीं हुई, लेकिन ये कॉपीज हैव बीन सर्कुलेटिंग, सर. खुद अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है. कॉपीज कौन सा? सर, पेज अगर आप 38 देख लीजिए काइंडली. अगर आप पहले सर, अगर काइंडली पहले 27 देख लें. ये तो जो इनकी फाइनल प्रोसीजर रिकमेंडेशंस इनके हैं पैराग्राफ 57 पेज 40 के ऊपर, वो तो इन इफेक्ट करते ही है ना. जेआईटी तो बना दी इन लोगों ने. हर चीज तो मेन प्रॉब्लम कमीशन का ये है, और ये सेक्रेटरी साहब इसको रिकन्फर्म करेंगे, is that this of course is not the first time your lordships have taken notice on this issue. Supreme Court has been active on this issue since 2006. The last order which was passed is very important, sir. Page 61 of this paper book. वो critical order, and sir, that is the first suggestion I would give in terms of a resolution to this problem. Page 61. A special implementation bench was created by this court regarding order. Page 61. Relevant पढ़े? जी. Sir, page 61. On the last date of hearing, 26/9/2018, this matter was fixed before a 3-member bench of this court, headed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. The operative part of the order passed on the said date is reproduced herein below. After hearing the applicants, we deem it appropriate that a special bench be constituted to supervise the proceedings before the commission, particularly with respect to the cases in which production orders. Now, मैं ये explain करूँगा थोड़ा सा बाद में, sir. Production orders were issued by the commission, but the same have not been complied with, and monthly reports shall be submitted by the commission to such special bench for perusal of the honorable members. It also directed that all the matters pertaining to missing persons which come to the Supreme Court be referred to the commission for adjudication and disposal. This case is to be fixed before the special bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan. It is very much clear from the above order of this court that a direction was issued to the office of this court that all matters/cases relating to missing persons which come to this court shall be referred to the Commission of Inquiry on Enforced Disappearance for adjudication and disposal. Therefore, the office is directed to comply with the direction of this court given in the order dated
26/9/2018 immediately. The Registrar of the Commission on Enforced Disappearance present in court has substituted a report through CMA number so and so, which is placed on record. Now, this is the critical operative part. However, the Commission on Inquiry on Enforced Disappearance is directed to submit a detailed report regarding the cases so far dealt with by the Commission, i.e., the status of each case, and if the case/cases have been disposed of, details thereof. That's the first direction. The second direction, the Commission shall also submit a separate report regarding the cases where production orders were issued by the Commission, and so far those cases have not been complied with. The requisite report shall reach this office for approval in chambers within 1 month positively. So this notion of production orders under the regulations is critical. When the Commission, after an initial inquiry... I don't understand. If you don't know where a person is, how can you issue production order? Yes. What the Commission does is that it does an investigation, and if it comes to a prima facie opinion on the basis of the evidence that this is a case of enforced disappearance. Now, when the term enforced disappearance is used, my lord, it by definition means that the abduction is by state officials. It can't be a private kidnapping. So when it only issues a production order when it comes to the conclusion that prima facie this is a case of enforced disappearance. Now the Commission, without knowing the whereabouts, somebody has to say that the custody is with us. The oral evidence hota hai. Now the reason why the Supreme Court passed this order is, and this will be confirmed by the registrar, is 645 production orders have been issued. ये 2018 का ऑर्डर आपने पढ़ा जी। अब 2024 में है, इसके बाद कुछ हुआ होगा ना? इसके बाद इस केस में जहां तक मुझे मालूम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 750 कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 2022 में स्टेटमेंट ये दिया था कि 645 production orders have been issued to the relevant agencies. Only 51 have been complied with. If your lordship may kindly see एक production order जरा page 66 पे देख लीजिए. That is the critical thing, that's the problem with the commission, is that their orders are not complied with. Page 66. इन्होंने तो ये तो पूरे कर दिए केस ये। सर वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इनको मार करके दिया है मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया। नीचे ये लिखा हुआ है क्लोज ड्यू टू नॉट बीइंग केसेस ऑफ इनकम्प्लीट एड्रेस, विड्रॉल बाय कंप्लेंट्स, नॉन प्रोसिक्यूशन। ये पूरी नहीं है। ये जो स्टार स्टेरिक बना हुआ है, मैंने इनसे पूछवाया, कह रहे सारे केस ही बंद हो गए, तो ये पूरे 10,000 केस बंद हो गए। सर पूरी नहीं है, मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ, मैंने पूरी रिपोर्ट पेज 66 अगर देख लीजिए, पढ़ लिया। Since these orders, there are 645. Amna has just informed me that there are now 700. Yet commission itself has come to the prima facie opinion that this is a case where the relevant officials of the state are involved and those orders have not been complied with. और हुआ ये उसमें से तो एक one step at a time. जी Attorney General, मैं आपको रिपोर्ट पूरी देख लूं। have a look at the production order. जी सर। My lord. हाँ तो वो ये कह रही थी, वो तो यही बात कह रही है। सही बात है। तो इसका क्या हुआ फिर? सस्पेक्ट है ना, कुछ सस्पेक्ट करता है। If these production orders, it's a government constituted commission, and the government constituted commission has ordered something, then what happens now? He's saying that these production orders are not being complied with. I think under the Commission of Inquiry Act 2017, the Commission has the powers contempt. Powers of Judge of Supreme Court, sir. And वो तो ठीक है ना, those powers were ever object is not to send people to jail. No, but the what I'm object saying is to, if the people are
illegally detained to set them Right. free. जी. वो तो बात की बातें हैं. Well, I'm just. आप पनिशमेंट में हम नहीं, मैं punishment मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. That's right, sir. अगर हम पनिशमेंट में फौरन चले गए तो मसले का हल नहीं होगा. That's right, sir. That's right. No, I'm just with regards to the production orders. I mean, I'd have to check with the commission what happened. I आप mean, check this is कर लें. 2020. नहीं, in December 2020. So, देखें, what we can, I'm just thinking now aloud, subject to what everyone says, that let the government, because production, you are directed, government is directed in one form or the other, that you have to give us some response to a production order. That's right, sir. Yes, no, whatever, no, we want to keep him, he's being tried in a court of law. I don't know, whatever the reason is. But it has to solicit a response, some response. Of course, this is not the responsibility of this government, because this, for instance, this production order is dated 2020. Yeah. ठीक है, 10th November 2020. So we don't put the burden on your heads, but at least we want to know what you have to offer. So we will certainly give you time. And ये सारे production orders, if we tell the commission to provide them to you in a tabulated form, name, parentage, address, whatever, so you can easily traceable, and then you can submit a comprehensive response report, unless you have some better solution. I think that's कमीशन के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ये उनके सामने है, 193 के पावर है उनके पास, और वो अगर इन्फोर्स करा नहीं सकते अपने ऑर्डर्स, तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं, I think what my Lord the Chief Justice, उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर द 2017 एक्ट. आप बताएं, आप जरा माइक अपनी तरफ कर लें. जी, ये अगर जनाब पेज 29 पिटीशन जो है, इसको शायद अभी तक नहीं लगा. हम आपके ऑब्जेक्शंस ओवररूल कर दिए, आप उस पे उसी पे अटके हुए. नहीं, मैं ये तजवीज देना चाह रहा हूँ. इसमें कौन सा है? ये पेज 29. अब नंबर, अच्छा नील, नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20, हाँ मिल गया. जी, उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे हैं ना, आपने प्रपोज किया है कि ऐसा कमीशन मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है. पैराग्राफ ग्राउंड एफ है. ये ग्राउंड एफ में जो लाइन 8वीं लाइन है, द पिटिशनर देयरफॉर urges this honorable court to set up an effective and purposeful commission in exercise of powers conferred upon this honorable court and Article 187 of the Constitution, Order 32, Rule 2, read with 36 of the Supreme Court Rule 1980, coupled with the principles of Civil Procedure Code, as done by this honorable court in the case of Watan Party, PLD 2012, Supreme Court, comprising of the following, the ones that I suggest. देखिए, Ijaza, we are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work. You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government, why have they not been complied with? That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened. Because nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup. Let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into a setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. सर, मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को पता हो कि इस जो इनकी कमीशन है जो बनी हुई,
इसमें inherent disabilities और defects हैं. एतजाज साहब आपने नाम मैं आपको ये अर्ज करता आप हूं. चाहते हैं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बने जिसके 2 साल अभी रिटायरमेंट में बाकी हों, तो वो तो मुनासिब नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जज के खिलाफ नहीं लिटिगेशन सर, मैं अर्ज करूं उसकी वजह कमीशन जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली लेगा, ये बड़ा सीरियस मैटर. विद रिस्पेक्ट, therefore I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, ताकि वो 2 साल की tenure में वो इत्तेदाद कुछ कर साहब, सके. आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? जी हम जो चीजें, या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए, या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे. फिर आपका एतराज यही होगा कि जी क्योंकि नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को, ठीक है. तो वो अब नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, कितने बेंचेस हैं आपको पता है, कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है. तो जरूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियां आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले. ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो, नॉट पार्ट टाइम. सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम, तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है. या तो उसको कहे अच्छा आप केसेस ना चलाओ, बस यही काम करो. सर इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना, वो पार्ट टाइम भी नहीं है, वो फुल टाइम. आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें. एक दिन में तो नहीं होंगी ना, जरा से ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को. जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, आपने ने अपॉइंट किया था उनको. जी सर. मैं अब क्या कहें आपको, तो आपकी हुकूमत ने, सॉरी आपने नहीं किया तो अब आपकी हुकूमत ने थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना. अब हम थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में. मैं मेरा जरा सुन ले जो स्ट्रक्चर है सर. जी अब आपने जो देखा है ना, इसके आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जी पाकिस्तान बार, ये सिविल सोसाइटी के, आप जरा सुनिए ना, हमने बहुत दफा तजवीजें मांगी हैं, वो इंडिविजुअल पे होता है. कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रेसिडेंट कहते हैं यार ये क्या मुझे एक काम करना है मुफ्त में, ठीक है. तो वो भी देखें हम, ये बर्डन अब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अब बॉडी मीट ही नहीं करेगी, कभी काम ही नहीं करेगी. डेडिकेटेड होना चाहिए जो कि अगर काम करे आप तो असेंबली नहीं कर सकेंगे, इतने सारे मेंबर्स पूरे फिर वो पाकिस्तान में कल को कहेगा जी मैं तो रिटायर हो गया. वो एक टर्म का टर्म होता है, हर साल इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शनियरिंग में लग जाते हैं. फिर वो केसेस भी हमारे सामने नहीं कभी चलाते हैं कि जी अब इलेक्शन हो रहा है आप मेरा केस अर्जन कर दें. तो ये मैं इसमें जरा सा हम देखें इत्तेजाज साहब, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do the job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. Commission appoint हुई है. देखिए वो 2 किस्म के कमीशन होते हैं ना, एक होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो पावर उसका है, वो गवर्नमेंट का है, हमारा पावर है, गवर्नमेंट का. एक आपका पावर है, आपकी पावर को एक्सरसाइज पे. और मैं इसमें जरा एक चीज जो मैंने सिविल सोसाइटी के मोस्ट प्रॉमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव बंदे नॉमिनेट करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, द पाकिस्तान बार काउंसिल, presidents of the 4 provinces. Why? Sir, they are. अभी ये बाकी देख रहे हैं तो mix. Give me a reason. Reasons because they will they have an urge to pursue. They will. और हमारे बार एसोसिएशन में हर साल इलेक्शन हो जाता है, तो नया बंदा आएगा कोई हमारा नया मैंडेट लेके, ये एक रोस्टर ऑफ द बार इलेक्शन कंपटीशन में हो जाएगा. अरे वो आने देना, उनके कमेंट्स आते हैं, अगर सिविल सोसाइटी को वो ऐड करना वो तो उनका काम है, नॉमिनेट करना और इसको नोटिफाई करना ना. जी सर. चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है. चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वीमेन.
आप ये दो देखें, डायरेक्टर जनरल Itizaz sahab, sorry to interrupt. ISI. Ek second. Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. which was scheduled at 3 o'clock. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. We don't want to, we are taking this case seriously. یہ ہم اس کو کل فل کورٹ تو نہیں، بینچ تو نہیں ہے 11 بجے لارجر بینچ ہے. پی ایف یو جے کو بھی میں نے اس میں پی ایف یو جے اینڈ ٹو سینئر آفیسر، سینئر موسٹ آفیسر آف دی انٹر سروسز انٹیلیجنس اینڈ دی آئی بی. وہ تو آپ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات کریں نا، کمیشن وہ لیٹ دی اٹارنی جنرل ٹیک سم انسٹرکشنز اینڈ اس میں دیکھ سکتے ہیں اگر وہ نوٹیفائی کریں. اٹارنی جنرل آپ ایسا کریں آج we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do, come back with. Monday کو ہم نے بھی کوئی رکھا نا کیس، کیا رکھا تھا؟ Sir, I'm appearing for the respondent in two CPLAs that were filed by the ایک government. منٹ صلاح ہولڈ تھوڑا سا رک جائیے. There is presidential reference on Monday. Yes. کنٹینیو کر دی. ٹیوزڈے کو کر. آپ کہاں جا رہے ہو؟ بولنا چاہتے ہو؟ کمال. اچھا آپ ایسا کریں، کم اپ with some practical suggestions. Talk to Mr. Faisal Siddiqui. Take these production orders. بلکہ ہم آرڈر ڈکلیئر ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوری صلاح الدین صاحب، آپ اس کیس میں Sir, I am in CPLA 1503 and 1504. I am appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. جی صلاح الدین صاحب ہم نے وڈرا کر لی. These appeals have been withdrawn. اچھا یہ بتائیے، وہ جو کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس نے کیا کام کیا؟ وہ آرڈر ریویو ہو گیا کیا بعد میں؟ That commission headed by Dr. Mangal had furnished its report. The commission was constituted. نہیں، اٹ واز ہیڈڈ بائی کیا نام ہے، صادق سنجرانی. نہیں sir, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. اس نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ نہیں، انہوں نے اپنی رپورٹ ایک فرنش کی ہے سر. وہ کدھر ہے؟ Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. اچھا The report was furnished and it is on اس میں record. لکھیے وہ آفس کون ہے، اسٹینو کہاں ہے؟ یہ ریکارڈ کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کی نمبر، اس کو نمبر کر دیتے ہیں. اعتزاز احسن فیڈرل آپ کی ایک ہے 161 ہے، اور یہی ہے نا؟ خوش دل خان کی ہے 124. سب سے پہلا کیس گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، وڈرا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اور یہ ان کی اپیل ہے خوشدل خان کی. ان کا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کہنا چاہنا ہے. یہ تو ان کی آپ کو اگلے دن سنا تھا، ان کی تو کچھ ذاتی مسئلے ہیں، لیکن ہم ذاتی مسئلے نہیں سنیں گے اس کیس میں. یہ آتے ہیں، بتائیے. تو ہم ٹیوزڈے کو اس کو رکھیں گے، اینڈ وی وانٹ یو ٹو ڈائریکٹ this commission to provide you with the information, and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report. My lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, we might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. So over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal, all these matters pertain to
shall we keep your matters pending or shall we? आपकी भी 3 है ना, 1 2 3 जी मालिक ये विड्रॉ कर दो 4 जी मालिक विड्रॉ कर ले नहीं इनसे पूछना अटॉर्नी जनरल Ji, my lord, the instructions are to withdraw them. The गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान which means that the orders will revive. My lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order, on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted. The commission has furnished its report. So इसमें these देखिए petitions have become CPLA infructuous. 1503 1504 1505 and 4333 नहीं वो उन 3 का लिखें 2022 CPLA 4333 2021 पहले वो वाला लिखते हैं 2021 का Learned Attorney General states that he is under instructions that through these CPLA orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Learned Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, Learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए. ये इनका पहले लिखें. मेरे ख्याल में अब ये जो इनका नाम है आमना जंजुआ साहब का पहले आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें. मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए या मौसमात लिखें. MRS. ओके MRS आमना मसूद जंजुआ के केस में लिख दें states that her husband Mr. Masood Janjua was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that My lord, it's on. and that she is not, and that she had approached the commission. क्या नाम है इसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था? पेज बताया था ना 220 क्या था? 131. I suppose. आपने किसी ने बताया था? 131. हाँ? 131. 131. एक second. वो तो लॉ है. हाँ ठीक है ठीक है. Had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E, capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the commission. Also, others present, the commission comprises of, we are informed that the commission comprises of the following: Mohammad Sharif Virk, the chairperson is Javed Iqbal Sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the commission is Mr. Justice Retired Javed Iqbal, Mr. Justice Retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice Retired Zia Parvez, and Mr. Mohammad Sharif Virk. As member, वो members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness
of the ये लिख देंगे commission, ब्रैकेट में उसको एक दफा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा, ठीक है, उसके ब्रैकेट में कमीशन। दी मिस्टर खालिद नसीम, आप सेक्रेटरी हैं रजिस्ट्रार हैं? रजिस्ट्रार सर। Registrar of the commission, however, states that the commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered, being returned home. Full stop. इनका लिखने सिविल मिसलेनियस अपील नंबर 161/2023. The registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Itazaz Ehsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons, full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Itazaz Ehsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशनी खान का नंबर कर दें। अच्छा ठीक है, तो अच्छा फुल स्टॉप। The secretary of the commission similarly, another petition has been filed by Mr. Khushdil Khan Malik, but the same was also but in respect of the same office objection was also raised, and he has filed CM appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons and if the other grievances raised therein, some of which are personal, will not be attended to. Full stop. And the office is subject to our observations in this regard. इत्तेज़ाज़ साहब, और आपका भी यही होगा, वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे। Missing/enforced. नहीं, वो वाले केसेस जो है ना वो हम नहीं अटेंड करेंगे, आपको बता रहे हैं अभी से। हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं। इनका भी लिख दें टू बी नंबर्ड। They establish a pattern, and that pattern is the one that fact evidence. साहब देखिए, I know, देखिए, I'm very cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then you, देखिए एक सेकंड ठहर जाइए, that doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case, your remedy can be tort, your remedy can be a suit for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in under Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there, and we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं सारा लिखें, अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे,
देखिए उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे। अगर देखिए अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ब्रॉड स्कोप फोकस हम यही रख रहे हैं। ब्रॉड मिसिंग पर्सन का ब्रॉड स्कोप है। अगर आप इससे मुतमईन नहीं आप हम आपको रोकना नहीं चाह रहे, फिर हम आपका नंबर नहीं डालते हैं आज, फिर हम आपको लंबी तक सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे। मैं क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग है जी सर, मैं तो आप करिए अर्ज। जनाब फरमाते हैं तो मीटिंग मेरे होते हैं, मुझे नेक्स्ट डेट पे करिए। 2 जुमले तो अर्ज कर लें। चले करिए। मेरा जो मामला है ये इंडिविजुअल या हेबस कॉर्पस का नहीं है, ये आपको बताना है एक पैटर्न नया शुरू हो गया है ऑफ कमिटिंग अ क्राइम विच यू आर कंसर्न्ड विद इन द ब्रॉडर पिटिशन। ये एक पैटर्न को, एक डिजाइन को एड्रेस करता है। एज सच डोंट मैटर कि कोई उनमें दार था या कोई फरक हबीब था या कोई, इट इज द new mode of tackling. What basis are you saying this? Sir, वो मैंने example Are you dar? No. Are you his lawyer? I am Then here. on what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 लोगों के नाम पब्लिक इंटरेस्ट में आ गए। सर 4 लोगों के नहीं है ये। 4 लोगों के आपने नाम लिखे। 4 लोगों के नहीं, वो 4 से ज्यादा है वैसे, but they establish a pattern. 4 people. Of very not 4 sir, there are more than 4. आप पढ़ लेते हैं, अभी आके पढ़ लें। आगम और भट्टी 2 तो यही है। Asked the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given a statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or against वो तो Article 4 दूसरे of the केस में हमने किया है। नहीं, वो तो दूसरे केस में किया है। नहीं, मेरे केस में भी ये रिपोर्ट दे दे। वो दूसरा केस, वो तो वो वाला कंटेम्प्ट वाला, इसमें तो नहीं। My lord, it was in this case. हाँ? It was in this case. इसी में ही था। नहीं, वो वाला केस, वो जो कंटेम्प्ट वाला था। नहीं, इसी में नोटिस हो गया ना वो। हाँ? इसी में था। इसी बलोच मिसिंग A long day, but वो ये पेज 6 पे बलोच मिसिंग long day for पर्सन। you, I know. चले हम ये बात भी देखते। अच्छा, वो और क्या रह गया था? The commission is directed to submit comprehensive report and provide copy of the same to the learned Attorney General, including all production orders issued by it, and the learned Attorney General to submit report if the said production orders have been complied with, and if not, why not. ठीक है, फिर हम बाकी चीजें बाद में कर लेंगे। कमीशन हमारा हो रहा है 3 बजे से, आप भी तो उसमें आ रहे हैं ना हमारे सामने। कुछ बातें रह गई हैं तो हम इसको बताएं, कितना टाइम दें आपको? क्योंकि फिर आप देख लीजिए इनकी कुछ एंग्जाइटी और कमीशन वगैरह आप देख लें। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द कमीशन और नॉट, वो जब रिपोर्ट आपको देंगे उससे बातें आपके जहन में आ जाएंगी, फिर आप क्या करना चाहते हैं। तो कोई आप हमें डेट सजेस्ट कर दें। तो अब एक इनसे पूछते हैं। दूसरी बात, एक हमने जो नोटिस ली थी, मगर इन्होंने कहा था, मगर इन्होंने दे नॉट कंसर्न विद दैट, सॉरी बुरा ना माने शोएब साहिन साहब, हमने कहा था जी यहाँ से जो लोगों को उठाया गया था, उन्होंने कहा मैं ला रहा हूँ पिटिशन, मैं अमेंड कर रहा हूँ इसको। उन्होंने ना लाए पिटिशन और ना अमेंड किए। अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनका बुनियादी हकूक है। अगर वो कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो एक अलग बात होती है। ये नहीं कि उनको धक्के मार से, डंडे मार से उनको उठाया जाए। नहीं, उनको बहुत रुस्वा कर रहे हैं, ये बहुत रुस्वा किया है। एक सेकंड सर, आपने तो नहीं लिया है ना, इन्होंने वादा किया था वो करेंगे, नहीं किया उन्होंने पूरा वादा। हम अब अपने तौर पे कर रहे हैं। वी डोंट वांट दिस सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स employed by a responsible state. If someone wants to protest, let them protest to their heart's content. But you cannot just bundle, unless they are taking the law into their own hands, destroying public property or doing something violent. They have a right to protest. That right to protest
must not be in any manner curtailed, let alone by force. Okay? That's the fundamental right. We may just add things in the thing. So now we have to go to the commission. Now we just propose a date. How much time do you want? No, my lord, if And if you, can we appoint Mr. Faisal Siddiqui as amicus in this case? my lord, of course, Huh? of course. Mr. Faisal Siddiqui? Always. You're already appearing for someone or not? No, I'm amicus in all these missing Okay, person then- cases before the Islamabad High Court. That is why I had this in The amicus has to foot his own bill. ये बलोच हाँ आए हुए हैं ना जी जस्ट मैंने विजिट किया सर इट इज पैथेटिक तकरीर ना करें, कागज का टुकड़ा लाइए, फाइल कीजिए पिटिशन. वो मिस्टर फैसल सिद्दीकी, मिस्टर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट who is present in court and has rendered assistance is appointed as amicus to assist with the case. Whenever this case is fixed, his travel and staying costs will be borne by the government of Pakistan. Travel and staying costs, that's all. No fees. अच्छा, इसमें ये डेट कौन सी दे रहे हैं? ये बताइए अटॉर्नी जनरल, when what will be a reasonable time? My lord, if the commission can give हाँ, ये आपको देंगे, कितने दिन में आप दे सकते हैं पहले बताएं. इनको ये पूछ लेते हैं इनसे. खालिद साहब, आप कितने दिन में इनको दे सकते हैं? ताकि वहां खालिद साहब, कितने दिन में आप इनको दे सकते हैं? कुछ आइडिया दे दें. टाइम दे दें 2-3 भाई, हफ्ते, आपको कितने दिन में इनको कम से कम 3 हफ्ते दे दें, क्योंकि हमारा स्टाफ है हम नहीं, बात कर रहे हैं यार, एक स्टैंड रिपोर्ट भी नहीं है हमारे पास ना. नहीं, 2-3 हफ्ते में क्या है, एक जल्दी हफ्ते का काम करेंगे. है, 8-10 दिन में कर ले, 8-10 दिन मैक्सिमम. कितने, सर कितना टाइम? 10 days. दे दें, 10 to 15 डेज दे दें फिर सर. 10 to 15. विद इन 10 days. ठीक सर. ये 10 days में आपको देंगे, फिर आप कितना टाइम लेंगे? So if they can share production orders in, let's say, Within 10 days. share production orders जल्दी share कर ले. रिपोर्ट इन्होंने 10 दिन में देनी है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स 2 दिन में आ जाएंगे. आप हमें the case can be listed, let's say, after 2 weeks. 10 days के बाद 2 weeks. No, 2 weeks from now. ठीक है, फिर हम डेट तक लिख लेंगे. तो अपना जरा देख लेंगे कोई वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स मैं इनसे ले लूंगा 2 हफ्ते में रखा. प्रेफरेबली मिस्टर फैसल सिद्दीकी. If your lordship may just mention that the report which is to be submitted before this court on production orders must be on each of the cases. Yes, ये कोई general report. No, we don't want numbers. ये आप हमें नाम देंगे सबके, बल्कि इनको देंगे ना. सर, एक गुजारिश और है सिर्फ जी, वो ये है, वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम का करते थे कि मंडे अगर फिक्स करने लगते थे कोर्ट, तो वो कहते थे मंडे ना ट्यूसडे का. उनसे पूछते थे जब जज साहबान कि वाई नॉट मंडे, तो वो कहते थे केस तो पता नहीं चले ना चले, पर संडे खराब हो जाए तो ट्यूसडे. ऐसे ये बताइए साहब, आप हमारे सामने कभी आए और आपका केस ना चला हो? नहीं एक एग्जांपल देते हैं. नहीं, अगर नहीं चला तो आपकी एडजमेंट की दरखास्त आई हुई होगी. हमारी तरफ से हम पूरा बोर्ड खत्म करके जाते हैं. अब आप देख लें 3:30 बजे हैं, ठीक है. अगर आज हम आपको देर तक सुनते हैं, मगर आज हमारी JCP की मीटिंग है, Very grateful. वो 3 बजे रखी हुई है. अदरवाइज वी ट्राई टू फिनिश द बोर्ड, एटलीस्ट आई ट्राई टू ह्यूमनली पॉसिबल. वन ऑफ आवर कोलीग्स इज नॉट वेल. She is seriously unwell and she's come and sat in court. मतलब बलोच प्रोटेस्ट के बारे में सिर्फ एक बात करनी थी, बलोच प्रोटेस्ट के बारे में. मतलब सिर्फ एक बलोच प्रोटेस्ट के बारे में, प्रोटेस्टर्स के बारे में बात करनी थी. उन्होंने ये कहा कि जी जो पिटीशन पेंडिंग है हमारी वही रिक्वेस्ट करें. आपने कुछ नहीं फाइल किया, मगर हमने अटॉर्नी जनरल को ऑलरेडी कर दिया है. सो फार रिस्पॉन्स